Hello bachcho, how are you all? I hope you all will be fine. Okay, so let's do chapter number 1, first flight book, letter to God, question answers. So we will be doing the competency based questions because as per the CBSE latest trend, so 50% of the question paper will be based on competency based questions, wherein you have to express your views, your emotions. Okay, you need to express, you need to make your own answers. All right, so let's start with the flow chart. Let's understand the chapter, yeah, in points. So children, have a look at this flow chart. Lencho, a hard working farmer, is a god fearing man. Now we all know, we have read the story that Lencho had deep faith in God. At the beginning of rains, he was happy that his field would yield a good harvest. And in the beginning of the story, he was very happy. He was hopeful that there will be good harvest, right? He was what he was wanting. That was a downpour. All his crops were destroyed due to the hailstorm. His family was starving, so he wrote a letter to God asking for 100 pesos so that he can sow the seeds again, right? The postmaster read his letter and he was moved by Lencho's faith in God. So at the initially the postmaster was also laughing, but when he read the letter, he was deeply moved with the Lencho's faith in God. The postmaster decided to help and asked the postman for contribution. So we have read the story wherein the postmaster contributed some part of his salary, and he also asked his friends and the post office employees to give money and contribute in order to help Lencho. 70 pesos were collected. So who collected 70 pesos? Postmaster, and handed to Lencho in an envelope to make it appear as a gift from God. Lencho accepted the envelope without surprise because he was quite sure that he would get the help from God, as if he had known that God would help him. Lencho wrote a complaint letter to God accusing the post office employees of having stolen 30 pesos. As we all know that he called them a bunch of crooks, right? He requested God to send him the balance 30 pesos through some other means, not by the post office employees, right? Because he did not trust them. So that's the flow chart, and make sure that you write this flow chart so that while doing revision you just go through these points and you will be able to elaborate, be it any question answer. Let's do some competency question answers which are very important and that will help you to for a better clarity, for a better understanding of the chapter. Okay, let's do it. And before we discuss the competency based question answers, which are very important, right, let's have a look at the character sketch of the main characters. So number 1 is the protagonist, who is the main character, Lencho, and the other character which is also equivalent, that is postmaster. Let's have a look at it. Let's try to understand the mind map of both. So here are main points about the mind map of Lencho. Okay, so these pointers will help you to understand about Lencho's character traits. So first is Lencho is very hardworking. Yeah, as we all know, he's very hardworking. Second point, faith in God. Lencho had deep faith in God. Yeah, unwavering faith in God. Education. He is educated enough that he can write a letter. Doubts people. Yes, indeed, because he doubted the post office employees who actually tried to help him. Right. So these are the 4 points, and you can elaborate. You can add more points to it, right? So this will help you, like you can also draw this in your notebook, and this will help you to write a character sketch about the Lencho. Let's move on to the second character, who is the postmaster. So the postmaster mind map. What do we know about the postmaster? He is very kind, very humble, he is very pleasant, jolly fellow, fat. So about the first, whenever you write a character sketch, first write about the physical traits and then discuss about the character traits like intellect or education, and then write about the contribution in the story. Okay, this way you can write the character sketch. So first is the physical traits of the postmaster will be fat, and about the nature, he was very jolly, humble, kind. Reading the letter addressed to God. So how he read the letter which is addressed to God. Retaining Lencho's faith in God. How did he retain Lencho's faith in God? So he thought of helping
Lencho, right? And 70 pesos from staff and part of pay. He contributed some part of his salary, and he took help from his post office employees as well as his friends, and he somehow managed to collect 70 pesos in order to help Lencho. Complaint about post office people. Most probably postmaster, when he got to know that Lencho accusing them of theft, so he must have felt bad, right? And disappointment at Lencho's doubt. So it was the ironical situation wherein postmaster tried to help him in every possible way. Lencho, instead of thanking them, right, he doubted their good deed. He doubted and he accused them of theft, right? So there must be disappointment. The postmaster must have felt disappointed at Lencho's doubt, right? So you can use these points to elaborate more about postmaster, right? Now let us quickly move on to the next section, which is competency based questions. These are very important questions. Let's discuss one by one. So the first question is, who read the letter sent by Lencho? What did he do then? So the answer, the postmaster read the letter sent by Lencho. It was the postmaster who actually read the letter, right? When the post office employee brought it to him, as he couldn't figure out what to do with the letter addressed to God. So जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लेटर जो है वो गॉड को एड्रेस है, तो किसको देना है. सो ही हैंडेड ओवर द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, राइट? सो व्हेन द पोस्ट मास्टर रियलाइज्ड दैट द फार्मर वाज इन डायर स्ट्रेट्स. So the postmaster, after reading the letter, the postmaster was a kind person and he realized that Lencho was in dire need. So he decided to help by raising funds or by collecting money from the post office employees as well as his friends. He also contributed some part of his salary in order to help Lencho. So in this way, no need to write it exactly like this. You can use your own language, right? Make sure that the content should be correct. Okay. Now let's move on to the next one. Explain the irony in the chapter A Letter to God. So as we have discussed the irony part, so the answer is the situation at the end of the story was ironical. Same employees of the post office who had aided Lencho. Aided means helped. So the employees जो post office के थे उन लोगों ने उसको help किया था. They have aided Lencho with monetary contribution, right? They somehow managed to collect 70 pesos and they did it secretly, without letting him know that it was actually the post office employees as well as the postmaster who have collected the amount in order to help Lencho, right? But Lencho failed to understand their charity, their humanity and their kindness, and he rather suspected them of theft. Okay, so he was certain that they had stolen 30 pesos from the amount sent by God. अब Lencho को तो ये लग रहा था कि इन लोगों ने, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने 30 pesos चुराए हैं जो भगवान ने मुझे भेजे होंगे. करेक्ट? Okay, so this is the ironical situation. I hope it is understood. Now let's move on to the next question. So how does the postmaster's initial reaction to Lencho's letter differ from his final actions? So postmaster, हमने स्टोरी में देखा है कि initial reaction क्या था postmaster का, that वो बाहर से जब लेटर देखा कि लेटर एड्रेस्ड है गॉड को, तो even postmaster was also laughing. But then later on, as soon as he read the letter, then he was moved. He got very emotional after reading the letter and he understood the criticality that Lencho was in dire need of money. The postmaster displays magnanimity through his selfless leadership and personal sacrifice. So this word magnanimity, that means kindness. That is kindness, generosity, yeah. So the postmaster displays, वो दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है? काइंडनेस दिखा रहा है थ्रू हिज सेल्फलेस लीडरशिप. सेल्फलेस लीडरशिप है ना. अगर हैड ही बीन सेल्फिश, अगर पोस्टमास्टर सेल्फिश होता तो वो शो करता कि उसने हेल्प किया है, वो लेंचो को डायरेक्टली पैसे देता, करेक्ट. लेकिन उसने तो शो ही नहीं किया. उसने विदाउट लेटिंग हिम नो दैट इट वॉज पोस्टमास्टर हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम, राइट. उसने वो एनवलप में सिर्फ गॉड लिखा था, रिमेंबर, राइट. सो दिस शोज हिज काइंडनेस, okay, through his selfless leadership and personal sacrifice. What kind of personal sacrifice? He also contributed some part of his salary, correct. He contributes a significant portion of his own salary and persuades. Now persuades मतलब मनाना, किसी को मनाना, राइट. persuades his colleagues, उसने अपने colleagues को मनाया, अपने दोस्तों को मनाया, उन सब से पैसे इकट्ठे किए, करेक्ट. सो ही persuades his colleagues, और persuades की जगह आप convince भी यूज़ कर सकते हो, करेक्ट.
So he convinced his colleagues and friends to give acts of charity. He does not seek any credit or recognition for his help. उसको अपनी help, वो जो help कर रहा है उसके लिए उसको कोई credit recognition नहीं चाहिए. Instead he signs the letter simply as God to make sure that Lencho's faith remains intact. रिमेंबर उसने जो लेटर था उसको ही लिटरली साइंड इट, जस्ट उसने गॉड लिखा वहाँ पे, सो दैट लेंचो का फेथ जो है वो बना रहे, इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज फेथ इंटैक्ट. नाउ हिज प्राइमरी मोटिवेशन इज़ द वेल बीइंग एंड स्पिरिचुअल पीस ऑफ अ स्ट्रेंजर. उसका मोटिवेशन क्या था कि ये जो स्ट्रेंजर है, लेंचो तो उसके लिए एक स्ट्रेंजर है, राइट? उसने कितना एक्स्ट्रा माइल जाके उसको हेल्प किया. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन the well-being and spiritual peace of a stranger, which defines his noble character. Okay, so this is how you can answer, and you can also put your points across. Okay, but make sure that the content should be correct. Let's move on to the next question. So the next question is, describe the emotional state of the postmaster after he delivers the money. So postmaster का जो emotional state था, right, पैसे देने के बाद उसका इमोशनल स्टेट क्या था. ओके, सो आफ्टर सेंडिंग द मनी द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसेस अ सेंस ऑफ डीप कंटेंटमेंट. नाउ व्हाट इज कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन. सो जैसे मैंने आपको व्हाइल रीडिंग द चैप्टर एक्सप्लेन भी किया था, वेन एवर यू हेल्प समवन, राइट, यू फील सेटिस्फाइड, यू गेट सम सॉर्ट ऑफ जॉय एंड पीस. सेटिस्फैक्शन मिलता है जब हम किसी को हेल्प करते हैं, राइट. आफ्टर सेंडिंग द मनी पोस्ट मास्टर को तो बहुत खुशी हो रही थी, राइट. सो ही वॉज फीलिंग कंटेंटेड, सेटिस्फाइड. ही वॉचेज फ्रॉम हिज ऑफिस विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ वर्चुअस डीड, जिसने कि बहुत अच्छा काम किया है. ही एक्सपेक्ट्स टू सी अ लुक ऑफ जॉय और सरप्राइज ऑन लेंचोज फेस. सो लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर कि जब भी आप कभी किसी को हेल्प करते हो, राइट, यू गेट अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड आप उस सामने वाले का रिएक्शन भी देखते हो कि क्या उसको अच्छा लग रहा है, हाउ एक्साइटेड द पर्सन इज आफ्टर गेटिंग दैट हेल्प, राइट, if he or she is happy or not, right. So similarly the postmaster, he also expected that, he was looking for that joy or surprise or smile on Lencho's face, although the outcome is ironical because Lencho got angry, right. Lencho reaction was angry, and postmaster's internal reward remains his knowledge that he acted with genuine kindness. जेनवनली काइंडली था ना पोस्ट मास्टर, उसने तो बहुत अच्छा काम किया. एंड कंपैशन ड्यूरिंग समवंस डार्केस्ट आवर, किसी के डार्क आवर्स में, किसी के मतलब बहुत ही मुश्किल घड़ी में. इंस्टेड ऑफ डार्केस्ट आवर्स यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक इन द मोस्ट क्रूशियल टाइम और डिफिकल्ट टाइम, राइट. सो he has gone extra mile in order to help Lencho. However, he did not get the due award, he did not get the due reward, the kind of satisfaction he was looking for. He was looking for joy, he was waiting to see that smile on Lencho's face. However, it was irony was that Lencho got angry. Yeah, that is irony. एकदम उसके expectation से उल्टा ही हुआ ना. Lencho got angry and he wrote a complaining letter. I hope it is understood now. Let's move on to the next question. Now the next question is, how does Lencho's reaction to the post office employees reveal his flaws? Flaws क्या होता है? Errors, कमी, right? Mistakes, errors. So how does Lencho's reaction to the post office employees? उसकी कुछ कमी दिखा रहा है इसमें, उसके कैरेक्टर में कुछ कमी दिखा रहा है. Yes, definitely. क्योंकि एक तरफ तो उसका भगवान पे अटूट विश्वास दिखता है, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि he failed to recognize the humanity. कि जो स्ट्रेंजर्स उसको एक्स्ट्रा माइल जाके हेल्प कर रहे हैं वो तो वो देख ही नहीं पाया, करेक्ट. एंड ही मिस्टुक, उसने उनको, बल्कि ही मिसअंडरस्टूड देम. सो दिस इज द फ्लॉ मतलब कमी, एरर. ट्रैजिक स्टोरी में भी एक ट्रैजिक फ्लॉ होता है, राइट, एक कैरेक्टर में. सो ही फेल्ड, दो ही अंडरस्टूड गॉड बट ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स. दैट वॉज द फ्लॉ. सो लेट्स डिस्कस. वाइल लेंचो इज अ हीरो ऑफ फेथ, his character also shows a lack of worldly wisdom and a suspicious nature towards humanity. By calling the employees a bunch of crooks, he demonstrates that his focus is so entirely fixed on the divine that he fails to see the goodness in the people right in front of him. So this reveals मतलब ये showcase करता है. This reveals a stubborn, what is stubborn? Rigid, ज़िद्दी. This reveals a stubborn perspective where he assumes humans are dishonest.
जहाँ पे वो एज्यूम कर रहा है ना, ऐसा रियलिटी में तो नहीं था, वहाँ पे वो एज्यूम करता है कि उसने लास्ट में एज्यूम ही तो किया कि इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही बाकी पैसा ले लिया होगा। उसका ट्रस्ट जो था, वो फेथ, वो पूरा गॉड पे तो है कि गॉड ने तो मुझे पूरा 100 पीसोस भेजा होगा, वो तो एरर कर ही नहीं सकते। बट उसने बेईमानी का चार्ज किस पे लगाया? ह्यूमन बींग्स पे। ही एज्यूम्ड कि इन सब इंसानों ने तो मेरे साथ बेईमानी की होगी, राइट, विदाउट एक्चुअली नोइंग द सिचुएशन। सो इवन व्हेन दे आर बीइंग हिज ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स, उसके वेल विशर्स ही तो थे ह्यूमन बींग सारे, जितने भी ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने तो पैसे इकट्ठे किए उसको हेल्प करने के लिए। सो दिस रिवील्स अ स्टबर्न पर्सपेक्टिव वेयर ही एज्यूम्स ह्यूमंस आर डिसऑनेस्ट। ही एज्यूम्ड, उसने ऐसा सोचा, इवन व्हेन दे आर बीइंग हिज ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स, और यू कैन यूज वेल विशर्स। ओके, let's move on to the next question. Now let's discuss some very important competency based questions. Okay, and if you understand these questions, be it you will be able to answer any question, okay, whatever comes. So competency based is wherein you have to apply your own logic, right, and you need to express your views, right, whatever the question is. So if you understand the content, you can write your own answers. ओके, सो कंटेंट आपको पूरा स्टोरी अच्छे से पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टेक्स्ट की, और आप अपने आंसर्स खुद भी बना के लिख सकते हो। ऑलराइट, सो अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहला, लेंचो रिसीव द मनी एंड अ लेटर फ्रॉम गॉड बट स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी। लेंचो को पैसा मिला गॉड से, लेटर भी मिला, बट स्टिल वो खुश नहीं था। वॉज इट नॉट इन हिज एटीट्यूड टू बी हैप्पी विद वॉट ही अचीव्ड, कि उसको कुछ भी मिल जाए उसका एटीट्यूड ऐसा था कि वो खुश नहीं होता था, और या फिर उसका एटीट्यूड ऐसा था कि उसको खुशी नहीं मिलती थी जब भी उसको कोई मदद कर दे, कोई दूसरा उसको अगर हेल्प करता है तो क्या उसको खुशी नहीं मिलती थी। सो नाउ दिस हैज़ 3 क्वेश्चंस, 3 पार्ट्स, राइट। सो 3 पार्ट्स के हम 1 by 1 आंसर करेंगे। सो लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड एंड देयरफॉर ही रोट अ लेटर टू गॉड। करेक्ट, लेंचो को तो भगवान पे पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने गॉड को लेटर लिखा आस्किंग फॉर 100 पीसोस। बट वेन ही रिसीव द मनी एंड द लेटर फ्रॉम गॉड ही वॉज नॉट हैप्पी। इट वॉज नॉट दैट ही डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू बी हैप्पी। तो ऐसा तो नहीं था कि वो खुश रहने की आदत नहीं थी, चिड़चिड़ा इंसान था, ऐसा भी नहीं था। इट वॉज नॉट दैट he did not have the ability to happy, but that the amount of money the envelope contained had angered him. That angered him, or you can also write that made him angry. But the amount which he received, because he asked for more, he asked for 100 pesos, and instead of 100 pesos he got only 70 pesos. That made him angry. He was angry because he had received 70 pesos instead of 100. He had not for a moment doubted God or his ways. So not for a single moment उसने गॉड को तो डाउट किया ही नहीं, किसी भी क्षण उसने गॉड को डाउट बिल्कुल भी नहीं किया। On the contrary, he was certain that the post office employees had played some mischief, कि इन्होंने कुछ शरारत करी है। On the contrary, he doubted the post office employees. All right. Now he wrote another letter to God asking him to send the rest of the money, but not through the post office people. So he, remember, when he got angry, he asked for a pen and paper. He wrote another letter, and he raised his eyebrow in anger. So he wrote another letter, a complaint letter, and he demanded the remaining amount, but he said do not send it through the post office employees because these people are bunch of crooks. Correct? So this shows that Lencho had full faith in God and he never doubted his deeds, but he was confident that his desire would be fulfilled. Now in the given situation, it would be unfair to accuse Lencho of being ungrateful. हम उसको अनग्रेटफुल भी नहीं कहेंगे, राइट, कि वो थैंकफुल नहीं था। अनग्रेटफुल तो नहीं कहेंगे, गॉड पे तो उसको पूरा फेथ था। सो एज ही वॉज ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ द फेवर, एक्चुअली ही वॉज नॉट अवेयर दैट द फेवर वॉज बीइंग डन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड द पोस्ट मास्टर, राइट। This is the ironical situation wherein he was not aware that it was not sent by God, it was actually sent by the post office employees. He was unaware मतलब उसको पता ही नहीं था। So his life revolved around God and his benevolence. उसकी ज़िंदगी तो सिर्फ गॉड और उनकी दया पे ही
आसपास घूम रही थी. करेक्ट. होप दिस आंसर्स दिस क्वेश्चन. एंड आप इसको और इफेक्टिवली आप अपने खुद के वर्ड्स में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं. राइट. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन. द पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट्स सच पीपल हु स्टिल बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स. Mention those values of the postmaster which you would like to emulate in yourself. So postmaster क्या represent करता है? The people who believe in helping others, जो बहुत ही हेल्पफुल लोग होते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं. पोस्टमास्टर ऐसा तरह का इंसान है. सो ऐसी वैल्यूज़ बताओ जो पोस्टमास्टर के अंदर आपको लगी, जो आप खुद में धारण करना चाहेंगे, जो आप खुद में ये कुछ अच्छे गुड ट्रेड्स हैं विच आई वुड लाइक टू इम्यूलेट इन माई सेल्फ. So the answer is postmaster. So being kind, being generous, being a very positive person. The postmaster received a letter from Lencho which was written to God asking for 100 pesos so that he could sow his fields again and live until next crop comes. That we already know. Postman felt sympathetic towards Lencho. अब देखो वो उस लेटर को इग्नोर भी कर सकता था as a postmaster. Correct? But he was very kind. He was very generous. So he did not ignore. The moment he read the letter, he got to know the plight of this poor farmer. Plight मतलब उसकी बुरी कंडीशन उसको पता चल रही थी. He understood. So he is being human, right? He decided to help him. उसने निर्णय लिया that I will help Lencho. He gave up a part of his salary and he asked all other employees to help Lencho. So he did a kind of charity. Even his friends were made to contribute. राइट. उसने अपने दोस्तों से भी पैसे लिए राइट फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी एंड ही मैनेज टू कलेक्ट हाउ मच 70 pesos. ही सेंट द मनी टू लेंचो अलॉन्ग विद द रिप्लाई. अब उसने लेंचो को रिप्लाई भी लिखा. बट हियर यू नीड टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ही वॉज नॉट सेल्फिश, ही वॉज सेल्फलेस. ही डिड नॉट वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ क्रेडिट फॉर दिस चैरिटी. अदरवाइज वो अपना नाम लेके भी दे सकता था ना. बट ही डिड नॉट ask for any sort of recognition for this deed, for this kind deed, right? So why? The reason is क्योंकि वो उसके जो विश्वास था भगवान में बनाए रखना चाहता था. So in order to preserve the man's Lencho's faith in God, the postmaster through his behavior has proved that humanity has not lost its significance in our lives. कि जो इंसानियत है ना वो उसकी इम्पोर्टेंस अभी भी है. Correct? So his behavior shows. So what kind of traits, what kind of positive traits would you like to emulate, जो आप अपने अंदर धारण करना चाहेंगे. ह्यूमैनिटी. हर जगह लोग चैरिटी करते हैं, उसको शोकेस करते हैं राइट पोस्ट करके. बट द पोस्ट मास्टर राइट ही वॉज अ काइंड ह्यूमन बींग. हिज नोबल नेचर, सेल्फलेस generosity, love of one's brethren and respect in God, some of the characteristics that I would like to emulate in my own life. Okay, you can write it in your own language, right, as per your understanding. However, you can use these points, okay, in order to elaborate. All right, let's move on to the next question. If you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो इस बार मेरी फैमिली, मेरा परिवार और मैं इस साल हम भूखे रह जाएंगे. ये किसकी लाइन्स है? कुछ याद करो. लेंचो, राइट. जब वो गॉड को लेटर लिखता है. करेक्ट. सो ये लाइन्स लिखता था लेंचो. Lencho had faith in God, but he did not manage to solve the problem by himself. He did not have any money. He did not get any help from any of his relatives or friends. Did he lack the courage to resolve this matter by himself? What values did he lack? Lencho ने जब ये लेटर लिखा राइट क्या आपको लगता है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो खुद अपने हेल्प कर पाए राइट. सो लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर. He was completely dependent upon the crops of his field. As a farmer, he was completely dependent on his crops. अपनी फसलों पे ही उसका पूरा वो था ना डिपेंडेंसी. क्योंकि जब क्रॉप्स सही से होंगी, बारिश होगी, क्रॉप्स सेल होंगी मार्केट में, तभी तो उसका घर चलेगा. बट ड्यू टू हेल स्टॉर्म that has destroyed all the crops, we all know, right? Due to heavy rains and hailstorm. Now in the entire village, there was no one to help him during the time of financial crisis. वहाँ पे इस फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे पूरे विलेज में कोई था ही नहीं उसकी हेल्प के लिए. तो लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट क्या रहा उसके पास? उसको भगवान पे विश्वास था. ही रोट अ लेटर. ही हैड फर्म बिलीफ मतलब उसको पूरा विश्वास था इन गॉड. एंड हैंस ही रोट अ लेटर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 pesos so that he can
सो हिज फील्ड्स अगेन टिल द नेक्स्ट क्रॉप। उसको 100 पीसोस वो इसलिए नहीं चाह रहा था कि उसको जाके शॉपिंग करनी थी, वो 100 पीसोस मांग रहा है ताकि दोबारा से बीज को बोए और नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो प्रिपरेशन करे। एक्ट डिड नॉट प्रूव दैट ही लैक्ड द करेज। यहाँ पे इसी बात से ये प्रूव हो रहा है कि उसके अंदर करेज की, हिम्मत की कोई कमी तो नहीं थी। ही वॉज वेरी करेजियस, ही वॉज वेरी ब्रेव, क्योंकि इतने लॉस के बाद बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती दोबारा से स्ट्रेंथ रीगेन करने की, राइट। बट लेंचो ही हैड फुल स्ट्रेंथ। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ मैं फिर से बीज बोऊंगा, फिर से क्रॉप्स अगेन नेक्स्ट ईयर के लिए मैं आई विल सो द सीड्स, राइट। ऑल ही नीडेड वॉज 100 पीसोस, करेक्ट। सो दिस shows that he did not have any option left for himself. He had a firm belief in God and he was an ox of a man. He was an ox of a man means he was very hard working but lacked money to stand again. पर उसके पास बस एक कमी थी, किस चीज़ की? पैसों की कमी थी दोबारा फिर से खड़े होने के लिए, इसीलिए उसने 100 पीसोस डिमांड किए। सो पे कहीं भी शो नहीं होता है कि उसके अंदर करेज नहीं थी। ही वॉज वेरी करेजियस, राइट। I hope that answers. Let's discuss the next question now. Now this is the very important question. The people at the post office contribute to put together whatever they can manage for Lencho. That means कि post office के जो employees थे उन्होंने इकट्ठा किया जो भी वो manage कर पाए in order to help Lencho. What do you think was the reason behind their help? And as an employee, write about your perspective and reason for contributing to the fund. The fact that you don't want to say no to a cause initiated by your boss. You can also be an equally compelling reason. करेक्ट। सो एज एन एम्प्लॉय, लेट्स से आपका बॉस अगर आपको कंट्रीब्यूट करने बोल रहा है तो डू यू फील कंपेल्ड? कंपेल्ड मीन्स आपको फोर्सफुली देना पड़ रहा है पैसा हेल्प करने के लिए, राइट। इज इट अ कंपेलिंग रीजन? सो लेट्स आंसर बोथ द क्वेश्चंस. फर्स्ट इज द मेन रीजन बिहाइंड द हेल्पिंग लेंचो इज टू कीप हिज फेथ इन गॉड. द मेन रीजन क्या था? देखो, पोस्ट मास्टर अपने आपसे खुद भी डायरेक्टली मनी ऑफर कर देता, लेकिन यहाँ पर जो उसका जो भगवान पे विश्वास था ना, फेथ था, वो टूट जाता, राइट। अगर पोस्ट मास्टर डायरेक्टली वो लेटर पढ़ के और बोलता है लेंचो ये लो पैसे बेटा, ये लो आप क्रॉप्स को अपना करो, बट उससे क्या भगवान पे विश्वास टिकता है उसका? नहीं. तो इन ऑर्डर टू कीप हिज फेथ इन गॉड इंटैक्ट as well as to perform an act of charity, and I would also have done the same if I were one of the employees. Correct? Now the second part, to be kind, charitable and God fearing are a few important characteristics that our boss insists that we his staff imbibe. कि हमारे अंदर होनी चाहिए चैरिटेबल, काइंड, ये हमारे अंदर ये बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स हमारे सबके अंदर होने चाहिए. When we were informed about the cause for which a collection drive was initiated, we all were taken in. हम सबको उसका पार्ट बनना पड़ा, because he never puts a financial burden upon us if the reason is not genuine. अगर उसका कारण genuine नहीं है, रीज़न genuine नहीं है, तो हम सब जो है उसको हेल्प करते ही नहीं. सो देयरफॉर द पर्सपेक्टिव एंड द रीज़न बीइंग अप्रोप्रिएट, क्योंकि उसकी जो ऑब्जेक्टिव, उसका जो कारण था, राइट, जिस पर्सपेक्टिव के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो करा जा रहा है काम, राइट, जिस कारणवश हेल्प की जा रही है, तो रीज़न तो अच्छा था ना कि भगवान में उसका विश्वास बने रहे एक इंसानियत के नाते, एज अ ह्यूमन बीइंग. सो इट वाज फॉर अ जेन्युइन कॉज, अच्छे कारण के लिए, एक नोबल डीड हो रही है, उसके लिए हेल्प करने के लिए कहा गया बॉस के द्वारा एम्प्लॉयज़ को. Therefore, the perspective and the reason being appropriate. So, it was to facilitate the survival of an entire family struck down to by nature's wrath. Wrath क्या होता है? Anger. कि ये था in order to help a survival of entire family, not only लेंचो, उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट थी, करेक्ट. सो पूरी फैमिली को सर्वाइवल के लिए, ताकि जो प्रकृति का जो प्रकोप, जो गुस्सा, नेचर्स रैथ जो पड़ा है, उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, in order to protect not only Lencho and his entire family, that was a noble deed. एंड उसके साथ साथ उस इंसान का, उस गरीब किसान का भगवान में फेथ बनाए रखने के लिए, विश्वास बनाए रखने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ मैन्स अनडाइंग फेथ इन गॉड, द एम्प्लॉयज थॉट ऑफ हेल्पिंग द पुअर फार्मर. ओके, सो ऑल फॉर टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, let's meet in the next video. We'll read the next chapter together. Okay, till then, take care, happy learning.